Good morning, 10th standard. Today we start the sixth lesson. Population is there. Now, population is an important resources of any country. The qualitative aspect of the population are important for the nation economy and social progress. मतलब population ही है ना, population के ऊपर ही the economic nation economics depend रहती है और social progress is also depend. Now see, in this lesson we are going to learn the population of the Brazil and India. Now see all of you, there is a explanation is there. India's population is around 121 crores according to the census of 2011. India is the second most populous country in the world. मतलब इंडिया ये second most populous country in the world है. India occupy only 2.41% of the land area. Now see the world area is support the world where is support 17.5% of the world population. India's average population density is 382 person per square meter. मतलब एक स्क्वायर मीटर के लिए 382 पर्सन रहते हैं. नाउ एज पर 2011 सेंसस, इंडिया इज द पॉपुलेशन. इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी unequally disturbs physiography, climate and play an important roles in the disturbance of the population. मतलब physiography, climate play the important disturbance in the population due to the fertile land, plain land and availability of water. Human settlement have been established in this part of for the many countries. मतलब fertile land, plain, then availability of water, human settlement have the established the part of many centuries. मतलब है ना, जिधर प्लेन लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उधर पॉपुलेशन क्या हुआ था, इकट्ठा हो गया था. एंड दैट्स वाई देयर इज सो मच पॉपुलेशन इट डिवाइडेड इनटू सो मच पार्ट्स. द proportion of the population got concentrated in the few places. For example, the northern plain of the country, Delhi, Konkan, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai. On the contrary, in the mountain hilly region, dry desert area, dense forest area, density is the space because of the इंसेबिलिटी ऑफ द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी थ्रू द लाइफ. मतलब है ना, देखो मुंबई, पुणे, नागपुर, इधर क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है क्योंकि देयर इज़ सो मच फैसिलिटीज़ आर गेट टू peoples, but in the desert and hilly region there is no facilities that are available. That's why so many peoples are live that place and they come in where they get the job, then where they get the all the facilities, water facilities, electricity facilities, then social life is so means social life is so important for them. Now if we are in village and there, if we want to do something mail, then what happen, sometime there is a electricity is not there, then the net that Wi-Fi connection is not working, then we cannot we cannot forward the mail. But if we are in Mumbai, then there is no electricity cut, that's why we can send mail to any time. That is the facilities are there in the Mumbai. Now the second page is there. Now there is a geographical explanation in the Brazil. Now see, Brazil is the most populated country in the South American continent. मतलब continent में ना, South American continent में ब्राज़ील ही है ना ज़्यादा populated country है, with the population around 19 crore according to the census 2010. It rank 5th in the world. मतलब उनका 5th rank है. It is also the 5th in the world with respect to area. मतलब area से भी वो 5th rank पर है. Now Brazil occupy the 5.6% of the world total land. मतलब ब्राज़ील के हिस्से में 5.6% लैंड आई है वर्ल्ड के, एंड हैज़ 2.78 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, और उनका 2.78% पॉपुलेशन है. देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द पीपल इज़ अराउंड 23 पर्सन पर स्क्वायर मीटर. मतलब एक स्क्वायर मीटर के लिए 23 पर्सनस लोग काउंट किए जाते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन द ब्राज़ील. मतलब
उनका जो पॉपुलेशन है वो अनइवन हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन. द मेजॉरिटी ऑफ द ब्राज़ीलियन हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द 300 किलोमीटर ऑफ द, मतलब वो है ना 300 किलोमीटर में ही क्या करते हैं अपना घर ये करते बनाते हैं. मतलब ईस्टर्न कोस्टल एरिया कॉल्ड कोस्ट लोलैंड, देयर फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल हैव फ्लोरिश वेल देयर हियर. मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल है ना उधर का उधर अच्छी तरह से उन्होंने मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है हैव फ्लोरिश. That's why so many people live there, and as a result a higher density of the population is found in this area. Now on the other hand, the interior in the Amazon basin is very sparsely populated. मतलब जो Amazon basin है ना उधर पूरा जंगल है, forest है. The peoples cannot get the facilities, that's why no one can live there. Now unfavorable climate, heavy rainfall, accessibility and the dense forest are barrier to the डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट हियर. मतलब अमेजोन बेसिन में क्या होता है, बहुत सारे ना फैसिलिटीज़ का कमी होती है, इसके कारण लोग उधर रहते नहीं. देयर फॉर सेटलमेंट एक्योर ओनली फ्यू प्लेस इन द अमेजोन बेसिन, और इसलिए बहुत कम जगह पे अमेजोन बेसिन पे क्या हुआ है पीपल्स रहते हैं. द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ील इज़ लेस पॉपुलेटेड. मतलब ब्राज़ील का जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है वो लेस पॉपुलेटेड है. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द हाईलैंड ऑफ द ब्राज़ील इज़ मॉडरेटेड. मतलब वो है ना कम ज़्यादा हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पेज देयर इज अ पॉपुलेशन इज गिवन. See here, geographical explanation about the population. The sex ratio of the Brazil has been more than the 1000 since decade. Now considering the sex ratio of the Brazil, the number of women have considerably increased than the men in since 2001. मतलब 2001 में आदमियों से ज़्यादा औरतों का क्या हुआ था, नंबर्स बढ़ गए थे. इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन. मतलब मैं इंडिया में आदमियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है. In India, we see the fluctuation in the sex ratio since few decade. मतलब अभी थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन हुआ है. The women's numbers are increasing. There has been the slight increasing in the sex ratio after 1991. 1991 में क्या हुआ था, sex ratio क्या हुआ है, means there is a women's numbers are increasing because what happened in that 1890-2000 period. The parents give so much importance to only the son, they not give so much importance to daughter. That's why so many parents are did the abortion. That's why what happened, the girls are not come in the world. मतलब क्या होता था उनको ये ना पूरा ये जो दुनिया है वो दिखती नहीं थी. मतलब गर्ल्स को दिखती नहीं थी क्योंकि उनको वो क्या करते थे, पहले ही वो मार देते थे. इसके कारण क्या हुआ था, जो सेक्स रेशियो है वो क्या हुआ था, आदमियों का जो नंबर्स है वो बढ़ गए थे मेन के, और वुमेन्स के क्या हुए थे, कम हो गए थे. बट नाउ द पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड, दे गिव सो मच वेटेज टू डॉटर्स ऑल्सो. मतलब वो क्या बोलते हैं, अभी के जो पेरेंट्स है वो क्या बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इसलिए अभी वो लड़कियों को भी मतलब अपने लड़के जैसे ही क्या करते हैं, संभालते हैं. एंड दे गिव ऑल द ट्रेनिंग टू दैट गर्ल्स ऑल्सो. मतलब गर्ल्स को भी पूरा ट्रेनिंग देते हैं. मतलब जो लड़के काम करते हैं वही गर्ल्स भी अभी क्या करने लगे, काम करने लगे. दैट्स वाई सो मेनी पीपल्स माइंड्स आर चेंज एंड दे गिव फर्स्ट वेटेज टू द गर्ल्स. That's why there is a मतलब stability means there is a fluctuation in the sex ratio men as well as women. मतलब अभी जो वुमेन्स का जो नंबर्स है वो क्या हुआ है, बढ़ने लगा है. नाउ इन इंडिया, see geographical explanation. The rate of the growth of population has reduced considerably in the Brazil. However, this is not the condition of India. From 2001 to 2011, India's population is increased by 18.2 crores. मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 18.2 करोड़ से क्या होने लगा है, बढ़ने लगा. India's population growth rate was higher till 1971. Then this reduced stabilized the rate of the population
growth is now declining but the population is still growing. मतलब अभी जो 1971 में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वो है ना पॉपुलेशन का रेट है ना वो क्या हुआ था, बढ़ गया था. बट नाउ दिस डे व्हाट हैपन, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डिक्लाइन. मतलब जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो इंडिया में डिक्लाइन होने लगा है. अभी ये क्यों हुआ था? इन 1971 द पेरेंट्स आर नॉट वेल एजुकेटेड. मतलब उस टाइम के जो पेरेंट्स है वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि फैमिली जो उनका कैसा था, जो बड़ी फैमिली है वो क्या कर सकती है, सब काम कर सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं. बट व्हाट हैपन, देयर इज़ सो मच प्रॉब्लम्स आर कम बिकॉज all the children not take the education and some are uneducated. मतलब क्या होता था, सबको पढ़ाना मुश्किल हो जाता था. And their lifestyle is also not properly, उनका lifestyle भी properly नहीं होता था. But nowadays what happen, people the parents are educated and they give means they are do the means वो क्या करते हैं, अभी के जो पेरेंट्स है वो एक मतलब वो जो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट का जो स्कीम रहता है कि एक बच्चा मतलब एक डॉटर या सन रहेगा तो आपको जो भी गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगे. तो इसके कारण क्या हुआ है, जो है ना पॉपुलेशन भी अभी क्या हुआ है, कम होते नज़र आ रहा है. और अभी का जो अभी ये जो अपना ये थे मतलब बहुत सारा मतलब खर्चे, मतलब जो भी खर्चा है वो बढ़ने लगा है. इसके कारण क्या हुआ है, पेरेंट्स भी बहुत सोच समझ के क्या करते हैं, मतलब वो पॉपुलेशन ग्रोथ होने नहीं देते. एंड दैट्स वाई दे टेक द प्रिकॉशन फॉर द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन. मतलब वो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, प्रिकॉशन. एंड दे अरेंज अ कैंपेनिंग ऑल्सो एंड गवर्नमेंट अरेंज अ कैंपेनिंग ऑल्सो. मतलब गवर्नमेंट ने कैंपेनिंग भी क्या किया है, अरेंज किया है. It is observed that in the Brazil the rate of the growth is decline and Brazil population is may not increasing in the next 2 decades. और इसीलिए 20 साल में ब्राज़ील का कोई भी पॉपुलेशन क्या नहीं हुआ है, ज़्यादा बढ़ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने भी पॉपुलेशन के ऊपर क्या किया था, कठोर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे. Understand all of you? Now see all of you, only this much is there in this lesson. Now what is there? You have to see, you have to write the question answer of this lesson and you have to send me on my mobile number. So lesson is there. What is the importance of population and what is the disadvantage of population is there. Only the comparison is there in between the India and Brazil is there. Okay, in this lesson only that much is there. Other things are not included here. Okay, now only you have to pay attention on this much. Which one? 2 questions are there, means what is the disadvantage of growing the population and what is the advantage of growing the population. ये जो questions है वो क्या है, इस lesson में क्या है, बहुत importance है. Now geographical explanation is there. See, reason population is an important resource. Brazil population density is very less. क्यों डेंसिटी लेस है, इंडियाज़ पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ स्पार्स इन द अमेजोन बेसिन, क्योंकि अमेजोन बेसिन में पूरे फॉरेस्ट एरिया है, इसके कारण उधर बहुत कम लोग क्या करते रहते हैं. ये सब आपको क्या करना है, उधर वो लेसन मतलब क्वेश्चन आंसर्स में लिखना है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन द गंगा प्लेन. वाई द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज इन द बेसिन, रिवर बेसिन, बिकॉज द पीपल गेट द फर्टाइल लैंड. दैट्स वाई द पीपल लिव देयर एंड ऑल द फैसिलिटी दे गेट ऑल द फैसिलिटीज़. There is a communication facilities is there, then traveling facility is there, then they get the water also, then land for the agriculture purpose. That all things you have to write there. Understand all of you? And there is a important question is there, the similarity and the difference between the population disturbance in the Brazil and India is there. Understand all of you? Now you have to complete it and send me on my mobile number. Thank you.